Very good morning, children. How are you? Fine? Good. So, hope you are healthy and safe at home. Okay? Yeah. So, don't go outside. Spend your days at home. Okay? When the COVID situation, when COVID problems are solved, then we can go out. We can spend time outside in parks or restaurant, whatever it is. Until that, be safe at home. Okay? Because first health is important, life is important. Okay, so be safe and healthy at home, right? Yeah. So this is our chapter 4, lesson 4, street games of India. बोला था ना, street games of India. So what are the street games you have played? While seeing the lesson we have discussed this, right? Yeah. So here 4 or 5 street games are given, and we saw that in part 1, street games of India lesson part 1 we have discussed. So this is part 3 of notebook. CW लिखना है ना? हाँ. So this video is about the lesson writing part, right? Yes. So मैंने बोला था whenever you start your fair work, class work note, first write the date on the right side corner. Date. You have to write. That is the first thing. Then start writing. Top margin is there, no? Red color top margin with the 2 lines. So you have to touch the 2 lines, red margin, and write lesson 4. वहाँ लिखना है. Then next line. You have to write street games of India. In blue pen itself you have to write this too. ठीक. Then come here left side corner आपको next line में new words लिखना है. First division new words. Okay. Then start writing and leave one line and write new words. ठीक है, मैंने पहले ही बोला था ना, new words when you are writing new words आपको one line छोड़ना है. ठीक. And first letter always should be capital. First letter always should be in capital. Don't forget this. Yeah. So now let's start. So this is very easy and simple. It was very interesting now. Lesson 4. Yeah, because games. You like, everyone like games now. Yeah, so it is interesting. Let us start now. See, first one, memories. What is the pronunciation? Memories. 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 Take memories. So do you remember memories? What is memories? Remember, to keep in mind. So you will also have some childhood memories होगा ना आपको भी. Childhood memories where you have spent your time, to with whom you were enjoyed a lot, where did you go outside. Those things are called memories. ठीक. Then second one is even ground. Even ground. ठीक है. Even ground. Even ground मतलब मैंने बोला था ना flat ground, level ground, flat ground. ये next its meanings है ना, new words का meanings में देखेंगे. लेकिन now you should know the meanings. आपको इसका अर्थ क्या, इसका अर्थ you should know, no? पता होना ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ. ठीक है. सी इवन ग्राउंड. दैट फॉर एग्जाम्पल ऑल्सो मैंने दिया था वाइल टेकिंग द क्लास. क्या बोला? when you are going in road, see the road condition, somewhere it will be ups and downs, है ना? ups and downs will be there. They would have dug somewhere that road, it won't be in a good condition, so that is called a bad road. So here it was not like that. It was even, it was good, it was flat. ठीक है. सेम लेवल. सेम लेवल. ठीक. या. डेफ्ट. डेफ्ट मतलब डू यू रिमेंबर डेफ्ट? स्किलफुल. मैंने बोला था ना स्किलफुल, नॉलेज. स्किलफुल होना चाहिए इन सब्जेक्ट और इन गेम्स, इन ड्राइंग. आपको वो नॉलेज होना चाहिए ना, स्किलफुल. तो हियर इन गेम्स वाइल प्लेइंग ऑल्सो यू शुड हैव दैट नॉलेज. स्किल होना चाहिए.
so that you can win or else you will be the loser. तो विन करने के लिए वो ट्रिक्स, वो स्किल आपको होना चाहिए ना. हाँ, डेफ्ट. ठीक है, तो डेफ्ट है. चारपोई, 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 चारपोई. डू यू रिमेम्बर? बेड मैंने बोला था ना, चारपोई, बेड. सो व्हाट बेड? फ्रेम. सो four side also frame will be there, tied with rope. So nowadays it is, modern beds nowadays, more modern beds in wooden and in steel all it has come. Lekin olden age चारपोई was there with rope, bed with tied with rope. बोला था ना, याद में है? हाँ. तो next is jerk. Do you remember jerk? While teaching the class in new words we discussed, same thing, sudden movement, quick movement. So when did we use this? याद में है? When? So while playing kabaddi all, we should do it fast. That fast movement should be there. Quick movement should be there. बोला था ना? And even know that what is that? One game, Latu. We said no, Latu. We discussed about Latu. While doing Latu also, jerk should be there. Sudden, quickly we should do. मैंने बोला था ना? So while that string, while that rope, when you put down this Latu, it will roll, it will swing. Swing होगा बोला था ना? हाँ, that sudden movement. So jerk मतलब quick sudden movement. ठीक? Clumsily क्या है? Clumsily. Okay? Clumsily मतलब याद है? Clumsily, careless manner. ये Latu, while doing this Latu मैंने बोला था ना, this author, writer, what did he do? He played this Latu in a careless manner. ऐसा बोला ना? In a careless manner. So it was not a good play. When he started first time, it was in a clumsily. He played in a clumsily manner, careless manner. Okay? Warfare. क्या है? Warfare. Battle बोला था ना, warfare, like a battle. हाँ? Yes. Opposing. Eighth one. Opposing मैंने ये भी बोला था ना, explanation. One game I said you. क्या game है वो? हिंट दिया था ना आपको, हिंट दिया था गेम. चेस बोला था ना, ऑपोजिंग टीम विल बी देयर. ऑपोजिंग टीम हिंट दिया था ना. तो 2 team will play, single only, but 2 team opposite, you will also play, then opposite team will be there. ऐसा बोला था ना. सो opposing, playing against another. ठीक है? against another. got it? Opposing. So it is very easy, but you have to keep in remember. You have to memorize it. ठीक? So read it 2-3 times. It will be very easy. Right? So if you have any doubt, we will discuss in online class. You just ask me your doubts in online class. ठीक? And this is the second one. Second division, new words and its meanings. New words and its meanings. See, you have to leave 2 lines and then only start this division. 2 lines छोड़ना है, then only you should start this division. So first, this also you have to leave one line and write. Question should be in black, answer in blue color. ठीक है? Question black में लिखना है और answer blue में लिखना है. Don't forget this. ये सब हमने डिस्कस किया था. So it is very very easy. See, same thing repeating now. Memorize. Things you remember from the past. Past आपको मालूम है ना? Past, present tense, past tense, future tense. तो past, yesterday, day before yesterday, last week, last month, आपने क्या किया था? वो memory, it will be in memory, no? So remembering, memory, remember. Okay? Even ground, मैंने अभी बोला था ना? Flat, level ground. ठीक? Deft, ये भी बोला था. See, quick मतलब जल्दी. And skillful, that knowledge should be there about the playing. Whatever games, knowledge should be there. Without knowledge we play मतलब we will lose. ठीक है? Jerk,
सी jerk. Jerk मतलब short and sudden movement, short and quick movement. Okay. Clumsily, in a careless manner. बोला ना, clumsily, in a careless manner. See, this also we discussed here in new words. हमने discuss किया था ना. So this just it is repeating तो very easy है. ठीक है. Warfare, the act of fighting in a war. ठीक है. मैंने बोला था ना, fighting in a war, in a battle, war or battle, fighting. Okay. See, warfare, the act of fighting in a war. Opposing, opposing मतलब playing against another. Two teams will be there playing against another. Okay. Opposing, right? Daring, daring मतलब it is very easy. आपको मालूम है courage, bravery. तो to be in army, if you want to join in army, you should be courageful. You should have that braveness. Okay, yes, braveness to fight against the enemies, to fight for our country. वो courage होना चाहिए ना, bravery, braveness होना चाहिए ना. हाँ, तो courage or bravery, any one thing you can write. Okay, in exam also any one thing you can write. Courage or bravery, both same, meaning same है, word ही अलग है. Okay. So question should be written in black and answer आपको blue में लिखना है. After this division आपको 2 lines छोड़ना है. ठीक है. Leave 2 lines, then start third division. Answering short answers. ठीक है. See, short answers तो 5 ही है. And see, 2 lines, 1 line, very very easy. ठीक है. See, let me explain you. What is the game of goalie played with? Very simple. See, गोली मैंने बोला था ना, फर्स्ट गेम क्या हमने डिस्कस किया था चैप्टर में. फर्स्ट गेम गोली हमने डिस्कस किया था ना. तो गोली विथ व्हाट विल प्ले गोली, मैंने क्या बोला याद में है? मार्बल्स. यहाँ मैंने आंसर मार्बल्स दिया है, लेकिन 2 मैंने बोला था ऑप्शन. एक और मैंने बोला था, क्या बोला? मार्बल्स बोला और गोली. दैट सोडा बॉटल विल बी देयर नो. वी शुड cut that neck of the soda bottle and we will take that what marble, that balls बोले थे ना, soda bottle balls also we will take. So वो भी चलेगा. But लेकिन here answer you write this is very simple to write also. See, goalie is played with marbles. Okay, goalie is यहाँ आने चाहिए. ठीक है. goalie is played with marbles. इसी है ना, गोली इज प्लेड विथ मार्बल्स. राइट. तो क्वेश्चन आपको ब्लैक में लिखना है, आंसर आपको ब्लू में लिखना है. ऐसा आपको लिखना है, ANS ऐसा लिखना है. ये कॉलन है. ठीक है. ये 2 डॉट्स है ना, वो कॉलन है. आपको कॉलन रखना है. लीव 1 लाइन, देन स्टार्ट सेकेंड वन. हाउ वाज एंक माइकोली, एंक माइकोली प्लेड. प्रोनाउंसिएशन कैसा है? एंक माइकोली. ठीक है. एंक माइकोली. हाउ वाज एंक माइकोली प्लेड? मैंने बोला था ना दैट ब्लाइंड. क्या? वन क्लोथ वी हैव टू टाई इन आइज एंड वी हैव टू सर्च अदर्स, दे विल हाइड. मैंने बोला ना, लाइक हाइड एंड सीक, हाइड एंड सीक. हाँ, वो गेम है ये. ठीक है. आंसर. तो हाउ वी विल प्ले दैट गेम, लेट अस डिस्कस. आंसर ब्लू में लिखना है. गॉट इट? इन सी ऐसे आपको लिखना है, इन. ठीक है. In Ankh Macaulay, one player covers his eyes with his hands or with a piece of cloth. The others hide in different places and the blind man looks for them. Very easy है ना. हाँ. So ऐसा कैसा मैंने एक्सप्लेन किया है वैसा ही है. So very simple. आपको फर्स्ट अंडरस्टैंड करना है. आफ्टरवर्ड्स just 2-3 times if you read, no, it will be in memory. Got it? See, in Ankh Macaulay, one player covers his eyes with hands or with a piece of cloth. क्या? तो with hand also we can cover. Okay, one player he will cover his eyes. Eyes को it will cover, he will cover with hands or see, या
पीस ऑफ क्लॉथ से कवर करेंगे, ठीक है, विद हैंड्स और पीस ऑफ क्लॉथ ही विल कवर. दिस इज वन सेंटेंस. एंड नेक्स्ट इज द अदर्स हाइड इन डिफरेंट प्लेसेस. तो अदर्स है ना, अदर चिल्ड्रन दे विल हाइड इन डिफरेंट प्लेसेस. छुपेंगे, हाँ छुपेंगे. तो एंड द ब्लाइंड मैन लुक्स फॉर देम. One boy covered his eyes, no, that boy is called blind man. तो he will look for them, ढूंढेगा, ठीक है. So we want to search for them. Easy, no, very simple है ये लेसन, बहुत सिंपल है because games का लेसन है ना. Very simple. Got it? See, in Ankh Mycoli, one player covers his eyes with his hands and with a piece of cloth. The others hide in different places and the blind man looks for them. Simple. ठीक. So leave one line and again start third question. Question आपको black में लिखना है, answer blue में. ठीक. See, simple. What material are lattice made of? Lattice. याद है lattice? हाँ. तो what material? how it is made of? See, lattice can be, ठीक है, lattice can be made of wood or mud. हमने बोला था ना. तो फर्स्ट आतर का फर्स्ट लाटू हुड में नहीं था. तो सेकेंड लाटू ही ट्राइड विथ स्मॉल हुड. ऐसा हमने देखा था ना लेसन में. तो लैटूस कैन बी, आपको कैन बी एक्सिलरी वर्ब आपको ऐड करना है. कैन बी मेड ऑफ, फ्रॉम क्वेश्चन, मेड ऑफ हुड और मड. दैट्स ऑल. सिंपल है ना. लीव वन लाइन एंड गो फॉर फोर्थ वन. व्हाट क्वालिटीज डज वन नीड टू प्ले कबड्डी? क्या क्वालिटीज होना चाहिए कबड्डी प्ले करने के लिए? ठीक है. सी क्वालिटीज क्या होना चाहिए? सॉरी, यस, तो क्या होना चाहिए? लेट अस सी. टू प्ले कबड्डी one must be quick and strong. One also needs the ability to hold his or her breath, ठीक है, breath for long and to be a master of battle tactics. Since playing the game is almost like real warfare. ठीक, simple. See, to play kabaddi one must be quick and strong. बोला था ना. So जल्दी will say no, fast. Yeah, he should be fast. If he play slowly मतलब he will be out. तो fast होना चाहिए to play, and strong भी होना चाहिए so that he can run fast. Okay. If other player they catch him, if he is strong मतलब he can escape from the opposite team. बोला था ना. So to play kabaddi one must be quick and strong. One also need the ability to hold his or her breath for long. क्या है यहाँ his or her, because girls can also play, boys can also play, इसलिए his or her यहाँ दिया है. ठीक है. तो need the ability to hold what? Hold breath for long. We are breathing, no, this is called as breath. We are breathing the air, no, oxygen breathe करें ना, तो that is mentioned as breath. तो that breathing, no, we should able to hold that. क्या hold मतलब without leaving space, without leaving a gap, we will talk on no, continuously we will be talking. So they will say no, won't you breathe, won't you stop, take a breath, talk slowly, ऐसा बोलेंगे ना. हाँ, तो in TV में you can see. Yes, so some while doing this anchors they will talk without leaving some space. तो वो practice होना चाहिए. And breath, they should hold the breath.
that is called as. So यहाँ in game what we will do, kabaddi 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 kabaddi, they will saying on this. So 5 minutes also they will be saying without leaving space, that is called as hold the breath. ठीक है, वही हम बोल रहे हैं यहाँ hold the breath, hold करना. ठीक है. And to be master of battle tactics मतलब to be master of battle tactics मतलब that tricks है ना, तो how to play some tricks will be there, वो tricks मालूम होना चाहिए. master मतलब should be good at it. ठीक है, that tricks मालूम होना चाहिए, tricks में good should be good, that is called as master of battle tactics. Since playing the game is almost like real warfare. ठीक है क्या, ऑलमोस्ट मतलब फुल्ली. ठीक है, ऑलमोस्ट मतलब फुल्ली. तो दिस गेम नो इट विल बी फुल्ली लाइक अ रियल बैटल फील्ड. वॉरफेयर मतलब बैटल फील्ड, बैटल है ना, वॉर वॉर, तो लाइक अ बैटल फील्ड, लाइक अ वॉर इट विल बी. बिकॉज पिक्चर हमने देखा था ना बुक में, तो हाउ दे विल pull us, the opposite team no, they will pull us, they will they'll put us down, we will fall down, so it will be like a battle fair. इसलिए बोला था हमको strong होना चाहिए. To play this game we should be quick and strong, बोला था ना. easy, बहुत easy है. see, to play kabaddi one must be quick and strong. One also needs the ability to hold his or her breath for long and to be a master of battle tactics. Since playing the game is almost like real warfare. ठीक, या सिंपल easy है. Got it? So एक लाइन आपको छोड़ना है. Come for fifth one. क्वेश्चन ब्लैक में लिखना है. Who's the author of the lesson Street Games of India? Street Games of India का author कौन है? See, simple, मुल्कराज आनंद. कौन है? मुल्कराज आनंद is the author of the lesson Street Games of India. तो आपको क्या लिखना है? मुल्कराज आनंद. Then is the author of the lesson Street Games of India. From question itself, question में आप you can start. ठीक है, कॉपी कर सकते हैं from question itself. तो यही आंसर है, मुल्कराज आनंद. प्रोनाउंसिएशन बोलो, मुल्कराज आनंद. ठीक है. सो दिस इज योर थर्ड डिविजन. शॉर्ट आंसर हो गया. तो क्या करना है, टू लाइन्स आपको छोड़ना है. लीव 2 lines, then go for फोर्थ डिविजन आंसर इन लॉन्ग. ठीक, आंसर इन लॉन्ग. ये भी टू क्वेश्चन है एंड सेकेंड वन बहुत छोटा है. वाह. सो लेकिन फर्स्ट वन थोड़ा बिग, लिटिल बिग. टू नो प्रॉब्लम, 5 lines only. नो इट इज इजी. हाँ, kabaddi, discussing about kabaddi, you know no, so it is very simple. See, let us discuss now. क्वेश्चन ब्लैक में लिखना है, आंसर ब्लू में लिखना है. डोंट फॉरगेट, हैंडराइटिंग शुड बी नीट. ठीक. व्हेन डज अ प्लेयर बिकम डेड इन अ गेम ऑफ कबड्डी? डेड मतलब कब आउट होगा, कब डेड होगा, आउट. ठीक है. सी आंसर ANS ऐसा आपको लिखना है. इन अ गेम ऑफ कबड्डी, कमा. ठीक है. इन अ गेम ऑफ कबड्डी a member of one team crosses a line in the sand, goes towards the other team chatting kabaddi. बोला था ना कबड्डी 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 ऐसा बोलना है. chatting kabaddi under his breath without stopping. ठीक है, स्टॉप नहीं करना है. If he is able to touch 1 or 2 players from the opposing team मतलब opposite team. ठीक है, opposing team, while saying kabaddi, the person he touches is dead. The visitor then runs back to his side. However,
If the visitor is caught or he stops saying kabaddi, he is dead. The teams take turns to visit each other until all the member of one team are dead. ठीक है, बहुत सिंपल इजी है. लिसन, क्या बोला? डू यू रिमेंबर कबड्डी मैंने टीच किया था ना इन लेसन. सो कीप दैट इन योर माइंड. इसलिए मैंने बोला था वीडियो को वॉच करने के लिए. लेसन वीडियो पढ़ाया था ना, तो वो भेजा है, तो आपको वो वॉच करना है. सो दैट दिस लेसन्स वाइल यू आर रिमेंबरिंग नो, वाइल यू रीड, वाइल यू स्टडी, याद में होगा. ठीक है. सी, इन अ गेम ऑफ कबड्डी, a member of one team crosses a line in the sand, goes towards. ठीक है, till this I will explain you. ठीक है. सो कबड्डी में क्या होगा? तो अ मेंबर मतलब वन पर्सन. ठीक है, वन बॉय, वन पर्सन ऑफ वन टीम, फ्रॉम वन टीम, एक टीम से ही विल गो टू नेक्स्ट टीम. सी, crosses a line, याद में है क्या? दैट पिक्चर याद में होना चाहिए. सो सी दैट बुक, इफ यू वांट, मतलब यू टेक योर बुक एंड सी हाउ द पिक्चर इज गिवन. सो वन क्रॉस लाइन विल बी देयर, नो, वन लाइन विल बी देयर बिटवीन टू टीम्स. यहाँ एक टीम और यहाँ एक टीम, तो बीच में लाइन होगा. तो ही हैव टू क्रॉस दैट लाइन. सैंड में ड्रॉ. ठीक है, इट विल बी ड्रॉन इन अ सैंड. ही हैव टू क्रॉस दैट लाइन and goes towards the other team chatting kabaddi. तो cross कर, he should cross and he should go to the next team. next team वहाँ जाना है. chatting मतलब saying, chanting मतलब continuously we have to say. एक टाइम नहीं बोलना है कबड्डी कबड्डी कबड्डी, ऐसा नहीं बोलना है कबड्डी 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 कबड्डी, ऐसे विदाउट लीविंग स्पेस ना, विदाउट लिविंग एनी गैप, वैसा बोलना है. अंडर हिज ब्रेथ, विदाउट स्टॉपिंग बोला था ना, विदाउट लिविंग स्पेस, कंटिन्यूसली ही वांट टू से. तो आफ्टर सेइंग दिस, सी, इफ ही इज एबल टू टच वन और टू प्लेयर्स, तो टच करना है वन और टू प्लेयर्स को, उस टीम से टच करना है फ्रॉम दी अपोजिट टीम वाइल सेइंग कबड्डी. सेम थिंग. ठीक है, कबड्डी 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 ऐसा बोल से, like the saying, we want to touch one or two person. If he touches, no, that person is dead. dead मतलब यहाँ out, out. ठीक है, he will be out. Who's touching, no, if I am saying kabaddi 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 and I am coming from this team to your team, I am coming. ठीक है, तो I should say kabaddi 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 and I should touch you. one person or two person I should touch. तो मैंने टच किया तो तू आउट है. ठीक है, मैं हु आई एम टचिंग, नो, वो आउट है. तो मैंने तुझे टच किया तो तू आउट है, लाइक दैट. ओके. सो द विजिटर देन रन्स बैक टू हिज साइड. सो ही कैन टच एंड ही कैन कम टू हिज प्लेस. ही शुड रन टू हिज प्लेस. ठीक है. हाउएवर इफ द विजिटर इज कॉट, लेकिन, ठीक है, लेकिन इफ द विजिटर इज कॉट और ही स्टॉप सेइंग कबड्डी, आप लोगों ने मुझे पकड़ा. ठीक है, यू कॉट मी, यू हैव कैच, पास्ट टेंस कॉट है ना, यू हैव कॉट मी, यू हैव कैच मी, और एल्स मैंने ये कबड्डी कबड्डी कबड्डी, वी शुड से नो, मैंने ये छोड़ दिया तो मैं आउट हूँगी. ठीक है, तो आई विल बी आउट. गॉट इट. द टीम टेक्स टर्न टू विजिट ईच अदर. तो व्हाट विल हैपन? अगेन यू विल स्टार्ट. नाउ आई एम आउट, तो माई टीम ऑल्सो आउट, तो आपका चांस है. तो यू शुड कम टू माई टीम एंड यू विल टच अदर्स till everyone get out, no, because 5 will be there, 10 will be there in a team. तो सब लोगों को आपको आउट करना है from your team. Okay, so this is the game. Understood? Very simple and easy. See, one more, let me read once more. Again I am reading. In a game of kabaddi, a member of one team crosses a line in the sand, goes towards the other team chanting kabaddi under his breath without stopping. If he is able to touch one or two players from the opposing team while saying kabaddi,
The person he touches is dead. The visitor then runs back to his side. However, if the visitor is caught or he stops saying kabaddi, he is dead. The team takes turn to visit each other until all the members of one team are dead. ठीक है? Understood? Simple है ना? हाँ. तो next second one बहुत simple है. See, what is exciting about Indian street games? Exciting. What wonderful it is. Why that much happy? What स्पेशल. ठीक है? एक्साइटिंग. व्हाट स्पेशल है, व्हाट वंडरफुल है इन इंडियन स्ट्रीट गेम्स में? क्या वैसा क्या अच्छा है? ठीक है? सी, इंडियन स्ट्रीट गेम्स आर वेरी एक्साइटिंग. या इट इज वेरी गुड. बहुत अच्छा है. क्यों? सी, देर आर अ लॉट ऑफ फन एंड लाफ्टर एंड शाउट्स ऑफ जॉय when one wins and shouts of despair when a team loses. Above all, it is the joy of being with friends and playing as one that is exciting. That is exciting. ठीक है? तो क्या बोला? See, yeah, it is very exciting. See, Indian street games are very exciting. From here you can start. Indian street games are, आपको लिखना है क्योंकि it is in plural. Games plural में है ना, तो आर वेरी एक्साइटिंग. बहुत अच्छा है, बहुत स्पेशल है, वेरी इंटरेस्टिंग है. तो ऐसे आपको लिखना है. देन फुल स्टॉप. नेक्स्ट सेंटेंस. देयर इज अ लॉट ऑफ फन एंड लाफ्टर. फन, वी एंजॉय. नो, दैट इज कॉल्ड एज फन. इट इज फन दैट वी एंजॉय. तो बहुत एंजॉयमेंट है. एंड लाफ्टर, वी यूज टू लाफ. नो, यस. सो वाइल प्लेइंग, वेदर वी विल प्ले इन अ सैड मूड or we will laugh and play. How we will play? We will laugh and play, no? Yeah. So there is a lot of fun and laughter and shout of joy when one wins. So when you win, you will feel happiness, no? Shout of joy. Wow, super, hi, won. Like that you will shout, no? That they are saying. You will shout of joy when one wins and shout of despair when a team loses. ठीक है? क्या डिस्पेयर मैंने बोला था? व्हाट? डिसअपॉइंटमेंट. loses. Okay, that hope loses. That if now you are out, no, how you will feel? You will feel bad, no? That, oh god, I lose the game, oh my god, I am the loser. Like that you will feel bad, no? That is called, okay, despair. Okay, you are out, how you will feel? You will feel bad that you have lose the hope. नहीं, I thought I will win, लेकिन मैंने lose किया, ऐसा you will feel, no? Yeah, that is. तो that time also you will shout, shit, God, I lose. Like that all you will shout, no? हाँ, वो बोल रहे हैं. ठीक है? When a team loses. Above all, it is the joy of being with the friends and playing as one that is exciting. ठीक है? So above all मतलब, so more than this. यहाँ it is given, so 2 sentences given. It is very special, good, surprising, exciting, everything is given, and laughter, fun, it is given. लेकिन more than this, above all मतलब, लेकिन more than this, it is a joy of being with the friends. सबको अच्छा लगता है ना when you be with the friends. So if your parents ask to watch TV, don't go to play मतलब, you will feel bad. लेकिन if your parents ask to spend time with friends, go and play with friends मतलब, you will feel happy. Yeah, why? You are getting together. Friends के साथ you will be, no, that time you will feel happy. यहाँ this is said here. See, joy मतलब happy. It is the joy of being with friends and playing as one that is exciting. So playing with the friends, that is called exciting, that is happy. ठीक? Simple ना? Easy. Understood? Let me read again. Just listen once more. Yes. What is exciting about Indian street
games. Indian street games are very exciting. There is a lot of fun and laughter and shouts of joy when one wins, and shout of despair when a team loses. Above all, it is the joy of being with the friends and playing as one that is one is exciting. So playing with the friends, it will be happy, excitement hoga, happy hoga, you will feel happy. Okay, exciting. Khatam, finish. So very simple and easy, but you have to listen this video, you have to watch this video 2 or 3 times. ठीक? So bye, take care, be safe at home. Okay, bye bye, thank you.